Integer type, first question. Okay. A small squirrel jumped from pole 1 to pole 2 in horizontal direction. अच्छा, यहाँ से यहाँ. Squirrel is observed by a very small observer at origin. Okay. ये origin है. क्या है ये? If the average velocity vector is expressed as this thing. Okay, so Vx r, ठीक है. Value of this thing, so Vx plus, okay, upon क्या है ये 2, I think ये 21 है ना, क्योंकि कुछ और तो इसमें है नहीं, कोई और इसमें लेंथ वगैरह नहीं दी थी अपने को, राइट? या सो जस्ट 21. व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? तो पोल 1 से पोल 2 पे ये, ओह गॉड, ये बहुत ही घटिया सा कुछ दे दिया इसमें. ये 90 डिग्री है, सीरियसली ये तुम्हें 90 डिग्री दिख रहा है? हाँ. और क्या 50-50 है, मतलब ये 45-45 ट्रायंगल बना लिया, मतलब कि ये 45 रहेगा. ओह अच्छा, ये है एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई. ओके ओके, सो लाइक इसका टॉप व्यू कैसा रहेगा? टॉप व्यू ऐसा है, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है. पोल 1 जो है वो एक्स एक्सिस पर है और पोल 2 वाई एक्सिस पर है, राइट? ये 50 स्क्वायर रूट 2 है, राइट? रेंज अपने को फिर समझ गए 50 स्क्वायर रूट 2 होने वाली है. और हाइट, अच्छा दोनों जो है उनके ठीक है ग्राउंड पर ही है. सो लाइक कितना 5 मीटर इसने ट्रैवल किया डिस्टेंस, राइट? सो या एंड टाइम निकालना है ऑफकोर्स अपने को, राइट? सो इनिशियली इसकी वाई वेलोसिटी कुछ है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो वाई वेलोसिटी कुछ है नहीं, लाइक हाफ जी टी स्क्वायर जस्ट 5 टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये चीज. डिस्टेंस कितना है अपना 5, सो टी क्या हो गया 1, टी 1 है. सो जो भी वेलोसिटी थी, राइट, अपने का एवरेज वेलोसिटी. अच्छा टी 1 मिल गया, फिर इतना काफी ना. डिस्प्लेसमेंट तुम निकाल लो. डिस्प्लेसमेंट अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा नीचे 5 जा रहे हैं एंड देन फॉरवर्ड अपन जा रहे हैं, राइट? या सो -5 इन जेड डायरेक्शन, सो वो तो आ गया. उसके अलावा जो अपन बाकी सब कुछ कर रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन में कंप्लीटली, मतलब अपन पोल 1 से पोल 2 तक डिस्प्लेस हो रहा है, राइट? तो ये वेक्टर विच इज ऑफ कोर्स जस्ट -5 इन एक्स डायरेक्शन एंड 5 इन वाई डायरेक्शन. सो -5, 5 और ये सब चीज एंड आई थिंक अपॉन 1, दैट्स द थिंग. सो या यस, दैट मेक्स सेंस, यानी कि 5 हो जाएगा. एंड oh sorry, it's not 5, it's 50 square root 2, right? Oh, it's -50 in this direction, 50 in that direction. That makes sense. Of course, that's got the thing. S equal to half 80 square in this case, right? Must be the thing, of course. There we go, मतलब कि time period of course 1 है, and then ये जो vector था it's gonna be this vector. तो yeah, okay, upon 1 of course. That's the thing. तो अपने को क्या करना है, mod भी इनका addition, so like क्या है 105 upon 21, which is 5 of course. So first answer 5. Next question. Next question. Second is an old record player of 10 centimeter radius turns at 10 radian per second while mounted on a 30-degree incline as shown. क्या है ये? अच्छा, 30-degree incline record player of 10 centimeter radius, ये 10 centimeter होगा, turns at 10 radian per second. अच्छा, a particle of mass m can be placed anywhere on the rotating record if the least possible coefficient of friction that it has, right? तो no slipping condition चाहिए अपने को, right? Okay, तो उसके least possible coefficient of friction is mu. We find 2 square root 3 mu, right? Okay, cool. So ये जो record player है, like normal force on this particle it's always just mg cosine theta, right? So इसका जो acceleration रहने वाला है because of friction, that's going to be equal to mu times of that upon m, so like mu g cosine theta. So mu g cosine theta is right that acceleration जो कि constantly इस direction नहीं. अच्छा, it's ये record player जो है ये actual में right इस पे fixed है नहीं है. Okay, so just right, ये थोड़ा नया है कुछ तो भी, बट ये फ्रिक्शन पे तो कहीं भी पॉइंट कर सकता है. हाउ वुड वी नो कि या ये तो सही नहीं हुआ. सो इसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगने वाला है एट एनी गिवन मोमेंट, उसके लिए अपने को फ्रिक्शन लगेगा, राइट? बिकॉज ये जो चीज़ है, सो ओके थिंक अबाउट इट. इस पर कौन से फोर्सेस है? इस पर नॉर्मल फोर्स है, वो तो ठीक है, वो नॉर्मल डायरेक्शन में. टेंजेंशियल फोर्सेस कौन से है? एम जी साइन थीटा है, फ्रिक्शन फोर्स है, और कुछ है? और कुछ भी नहीं है, राइट? या बस उतना ही है. और अपने को पता है कि टोटल फोर्स इसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो रहेगा उसके इक्वल होना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स, राइट. तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा ऐसे रहने वाला है एंड देन ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन. सो फ्रिक्शन शुड, राइट, ओके, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की बात, राइट? सो नेगेटिव ऑफ दैट थिंग लाइक दैट.
सो इनका एडिशन फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा ऑफ कोर्स. सो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कब रहेगा? व्हेनेवर दिस हैपेंस, मतलब ये ऐसा है एंड देन ये भी ऐसा है, so दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट? सो एम ओमेगा स्क्वायर आर, बेसिकली ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन है इन दिस डायरेक्शन, दैट्स इक्वल टू, सो मैक्सिमम कंडीशन है, यानी कि हमें म्यू जी कोसाइन थीटा पुट करना है अपने को, राइट? कोसाइन थीटा, सो म्यू जस्ट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी साइन थीटा अपॉन जी कोसाइन थीटा, दैट शुड डू इट. सो आर कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं ना. ओमेगा स्क्वायर कितना है? 100 टाइम्स आर इज जस्ट 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1, प्लस जी विल जस्ट से इट्स 10 टाइम्स साइन थीटा. सो right, sine theta is 1 upon 2, I guess, and then this thing upon cosine g cosine theta is like 10 times of square root 3 upon 2, that should do it. ये जाएगा 10, so ये सब हर जगह से कट गया, it's gonna be like 3 upon 2 upon square root 3 upon 2, so just square root 3, that's mu, so 2 square root 3 mu is gonna be 2, of course. Next question, third question. Third is a man can just push a box on 37-degree concrete slope. Acha, when he keeps it at a point where the angle increases to 53 degrees, अच्छा इसको push करना है यहाँ पे आगे, he can just hold it from sliding back if the coefficient of friction between the box and the concrete slope is mu. Okay, find 1 upon mu, right? Assuming that the man is applying same magnitude of force along the tangent to the curve only. अच्छा, wait, what? Same magnitude of force? But इसका मतलब है कि oh, just push a box on 37 degree concrete slope. When he keeps it at a point where the angle increases to 53 degrees, he can just hold. अच्छा, तो दोनों अलग अलग केसेस है, इसमें सेम कंटिन्यूटी नहीं है, राइट? तो इस पर्टिकुलर केस में इसका जो फोर्स है दैट इज राइट, इट जस्ट पुशेस द बॉक्स, मतलब कि F इज इक्वल टू जो भी इसका फ्रिक्शन फोर्स रहने वाला है, राइट, दैट थिंग प्लस राइट जो इफेक्टिव ग्रेविटी रहने वाली है, राइट, या इसका रिटार्डेशन जो भी रहेगा, सो उसको अपन mge बोल देंगे, वॉट एवर यू गेट द आइडिया. ओके, और इस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स है राइट, इट्स जस्ट होल्डिंग इट, तो फ्रिक्शन के साथ में काम कर रहा है, राइट? लेट्स डू दिस थिंग. सो पहले इसमें क्या होगा, F इज इक्वल टू, सो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू mg कोसाइन थीटा, सो राइट, म्यू mg कोसाइन ऑफ 37 डिग्रीज and plus mg sin theta is like mg cosine of 53 degrees. Don't you agree? Right. इस केस में f is equal to negative mu mg, और अपने को ढूंढना है कैसे, mu ढूंढना है. oh, ठीक है, f is equal to negative mu mg cosine of 53 degrees, sorry 53 degrees, yes, which is like sine of 37 degrees, जो भी है 3 degrees काफी है, ठीक है, plus mg sine of 53 is like cosine of 37 degrees. That's gonna work, I guess. Is that correct? I should be, right? Yeah. So just just divide these things, like 1 is just equal to, again I cut it out directly. So negative cosine 53 degrees times mu, of course. Okay, mu को हर जगह पे भूल मत जाओ. Negative mu cosine 53 degrees plus cosine of 37 degrees is equal to mu times cosine of 37 degrees plus cosine of 53 degrees. इसका मतलब हुआ कि mu times of ये उधर, yeah, right, it's going to be cosine of 37 degrees plus yeah, like basically sine of 37 degree plus sine of 37 degree, whatever, that's equal cosine चीज है, sorry, is equal to ये चीज, मतलब कि cosine of 37 degrees minus sine of 37 degrees, right? Yeah, of course. So now we can calculate sine of 37 degree कितना हो जाएगा, 3/4, sorry 3/5, और ये हो जाएगा 4/5, so 3 plus 4 is like 7/5 of mu is equal to, और यहाँ पे क्या होगा, 1/5, so mu is just 1 upon 7, 1 upon mu is 7 basically. Third का आंसर 7. Next question, fourth.
Fourth is the projectile is thrown with a velocity of 10 square root 2 meter per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Okay, मतलब 10 ऐसा 10 ऐसा. The square of the time interval between the moments when speed becomes this thing. Square root of 1 to 5 meter per second is seriously. Square of time ठीक है मतलब जो सम रहने वाला है इसका इक्वल टू 125. जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी वो तो 10 थी मतलब वो 100 है. तो 25 दूसरी स्पीड है राइट मतलब कि वो 5 हो गई बेसिकली प्लस माइनस 5 शुड से. ठीक है. ऑफ कोर्स तुम्हारा मिडल पॉइंट रहने वाला है टी अपॉन टू उसके थोड़े से आगे रहेगा और ये थोड़े से पीछे रहेगा राइट. या कितना आगे कितना पीछे. सो जी टी लेट्स से वो टाइम टी आगे और पीछे लाइक जी टी इज इक्वल टू यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है अपने को वर्टिकल वेलोसिटी अब क्या चाहिए वी वांट इट टू बी 5 ऑफ कोर्स. सो gt is equal to 5 and then yeah, like g is 10 so t is equal to 1 upon 2. तो 1 upon 2 ऐसा 1 upon 2 ऐसा 1 second is a time interval right. तो यहाँ पे कभी तो किसी को भी टाइम पे 5 ऊपर 10 ऐसी थी वेलोसिटी फिर 1 सेकंड के बाद में 5 नीचे 10 ऐसी जाएगी राइट. या सो 1 is the thing. Next question. Fifth. All contact surfaces are smooth. The ratio of masses m1 is to m2 is to m3 is equal to 7 is to 5 to 3. Sure. The force F applied to m1 is finite and constant. Ratio of magnitude of contact forces between m2 and m3. Contact force between m2 and m3. अच्छा. यहाँ का हाँ ठीक है ना. तो सब कुछ सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है तो यहाँ पे राइट m2 and m3 to the magnitude of contact force between m1 and m2. m1 and m2 का बीच का जो फोर्स रहेगा that's proportional to m2 plus m3 और m2 और m3 के बीच का जो फोर्स है that's proportional to m3 right. So there we go m2 plus m3 upon m3 which is 5 plus 3 upon 3 right. Wait is that correct. अपने को पहले m2 to m3 चाहिए तो पहले ये वाला और फिर ये वाला राइट. अच्छा so we want what 3 upon 5 plus 3 so 3 upon 8 that's k and value of 8k is going to be 3 in that case. Okay next comprehension type. Paragraph 1. Okay, it's the first question. Okay, a lift is given. Lift can move upward or downward. A light inaccessible string fixed from ceiling to earth. Lift with a frictionless pulley and tension string T1. Okay, frictionless pulley दिए. Fine. Two masses of M1 and M2 are connected with inextensible light string and tension in the string is T2. अच्छा, तो ये T1 है tension T2. Fine. Read the questions carefully and answer. If m1 plus m2 is equal to m and lift is moving with a constant velocity, value of t1 is okay. And lift is moving with constant velocity. And m1 m2 क्या कुछ दिया अपने को बड़ा है छोटा है कुछ भी नहीं. Okay. Well, I mean of course mg के इक्वल तो हो ही सकता है कभी ना कभी जब ये सेम मास हो जाएगा. अगर सेम मासेस नहीं है then what will happen? So राइट मतलब ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना ही नीचे जाएगा राइट. सो इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट्स लाइक ओके इट कैन मूव इफ m1 m2 आर डिफरेंट राइट. Okay, let's do the thing in that case. So T1 is of course is 2T2. मैं T2 को सिर्फ T बोल रहा हूँ So the thing is like T dot x अपने को अप्लाई करना है. So पहले इसके लिए क्या हो रहा है T times of इसका ऊपर का एक्सेलरेशन कितना होने वाला है like T upon m2 minus g और फिर ये है plus t times of t upon m1 minus g right. This thing must be equal to 0. I guess that makes sense. अच्छा ये जो string ये ऊपर नीचे हो सकता है राइट. सो मुझे g इफेक्टिव बोलना चाहिए बिकॉज हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन अलग अलग हो या सो इसका एक्सेलरेशन अलग हो यानी कि ये g से ज़्यादा हो अगर इन दैट केस दिस इज द थिंग. So this means like t times of 1 upon m1 plus 1 upon m2 is equal to 2 times of g effective right. So oh it's a constant velocity huh. Oh in that case g effective is g. Cool. So yeah and then m1 plus m2 is just m so upon m1 m2 is equal to या फिर जान दो अभी के लिए इसको ऐसे रहने दो. You know what हार्मोनिक मीन जैसा होने वाला है. So t is just 2 upon 1 upon m1 plus 1 upon m2 that's the harmonic mean of these guys that times g and this must be bigger than or equal to less than or equal to the arithmetic mean which is m1 plus m2 upon 2 which is m upon 2 times g. So if 2t is less than or equal to mg right so it's got to be c
फर्स्ट का सी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. तो इसका से रहने दो इनफैक्ट, राइट. मतलब ये तो अभी काम का है ही, तो उसका से रहने थे. ओके, और क्या दिया है? M1 is very small as compared to M2. So 1 upon M2 is negligible in comparison to M1, I guess. Yeah. Okay, and lift is moving with constant velocity. Value of T2 is nearly. Right, that should be the case. M1 is very small as compared to M2. So ये चीज max, yeah, ये जो चीज है that's the major contributor. तो फिर इसको तुम हटा सकते हो, I guess. या फिर तुम सोच सकते हो कि दिस इज लाइक ओके M2 plus M1 upon M2 M1, but then M1 is small, so इसको हटा दो, just this thing 1 upon M1, which is yeah the same logic. So T is just equal to 2 M1G, right? And it's moving with constant velocity, so G effect is just G. So value of T2 is just going to be 2 M1G, right? Yeah. So second का answer B. Third, okay, if M1 is equal to M2 and M1 is moving at a certain instant with velocity V upward with respect to the lift, okay, is moving in upward direction. What? Sorry, if M1 is equal to M2, right, and M1 is moving at a certain instant with velocity V upward with respect to lift. What? Okay. With respect to lift, I think मैं बोलना चाहिए which is moving in upward direction with constant acceleration A less than G, right? Okay. Then the speed of M1. So lift is moving in what? Upward direction. Okay. Speed of M1 with respect to lift. What? Oh, अच्छा ये क्या हो रहा है इस पे? Okay, 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 okay. That kind of thing, right? Acceleration कैसे change हो रहा है and everything. Doesn't matter कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि हो क्या रहा है. In the end, it's just कि वो दोनों acceleration, yeah, tension सेम हो जाएगा and then of course वो zero हो जाएगा. So yeah, acceleration is zero. So speed क्या है? It remains constant. Third का answer C. Okay, next. Second paragraph. Okay, a student having a mass 80 kg stands on horizontal weighing machine of negligible mass attached to a massless platform that slides down a 30-degree rough inclined plane. Okay, ये plane है, ये platform, whatever. The weighing machine rates 75 kgs. ठीक है, तो normal force 75 kg है, fine. मास दिया है अपने को स्टूडेंट का, ठीक है. नेग्लिजिबल मास है प्लेटफॉर्म का, हाँ. जब इसका मास कुछ भी नहीं है. अच्छा, प्लेटफॉर्म भी मासलेस है, बढ़िया. Slides down, so ये जो पूरा सिस्टम है that's of the mass 80 kg, right? Yeah. Slides down and the normal force is from here. Okay, that's 80 kg. Cool. That's now 30. And by the way, क्योंकि ये massless है, there must be the same normal force from there as well, right? Yeah, तो ये normal force है यहाँ पे, and on a rough inclined plane, the friction must act in that direction, so that, yeah, of course, that should happen. अच्छा, बाय द वे अगर ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होता देन व्हाट वुड हैपन इज कि ये डायरेक्टली बस निकल जाता है, राइट? या ये जो कंपोनेंट है वो अनबैलेंस जाता है, राइट? बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन है, फाइन. द वेइंग मशीन रेट 75 kg स्लाइड्स डाउन 30 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन, फाइन. Sorry. Okay, calculate the vertical acceleration AY of the student. No big deal. It's just like G sine theta in that direction, and this is just going down, of course. It's a normal, it's a component in that direction. Okay, you got component of gravity in that direction and everything. I mean, think about it. You actually do know कि friction कैसे काम कर रहा है. So what's the big deal now? Yeah. So you know कि friction ऐसे काम कर रहा होगा. यहाँ पे ये normal force है, and it's actually moving. So what's happening is that this is just mu times of n. और ये जो normal force है that was just how much 800 newtons. So actually we can figure out क्या होने वाला है, right? We can figure out the normal force, no big deal. And horizontally, of course, these should just. Oh, and by the way, okay, now we know what. Oh, so जो theta रहने वाला है. अच्छा, तुम्हें theta fix दिया यार, 30 degree rough inclined plane. Amazing. But
वेट, अच्छा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट्स एक्चुअली अ फिक्स्ड वैल्यू, ओके ओके। अपने को फिर वो ऐसे डायरेक्टली निकालते आएगा, हाँ राइट। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल ऑल्सो 60 डिग्री, सो इसका कोसाइन 60 डिग्री, दैट n अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू ये चीज का कोसाइन 30 डिग्री, सो म्यू n एंड देन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, सो म्यू मस्ट बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ये तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या सो थर्ड का आंसर डायरेक्टली यू नो it's a kinetic friction between platform and the slope. It must be 1 upon square root 3, not this thing. What's going on here? No, horizontal force must be 0, right? Right, something must be wrong. Oh, अच्छा ये जो बंदा है उस पे भी horizontal force लग रहा है ना? Okay, that makes sense. तो इस ये जो force रहेगा उसका अपन कुछ भी नहीं कर सकते, in fact, just let it be. Horizontal force रखना है, that's the only thing, right? स्टूडेंट का मास दिया अपने को, और राइट वेइंग मशीन रीड साइंटिफिक व्हाटएवर मास दिया है ना अपने को, उतना काफी है। वी जस्ट वांट द एक्सेलरेशन एवरीथिंग। सो जो पूरा ब्लॉक है तुम इसको 80 का मान सकते हो, राइट। ओके, कैलकुलेशन मेरे को दिया नहीं है इनफैक्ट, इट्स काइंड ऑफ हार्ड। वेइंग मशीन रीड 75 kg, दिस इज नॉट नाइस। वेट, बट इस पे ग्रेविटी कितनी है? इस पे ग्रेविटी है 800 और ये ऊपर 75 है, दैट जस्ट मींस राइट। ओके, तो ऊपर 750 न्यूटन बैठ रहा है, दैट जस्ट मींस कि या लाइक 50 न्यूटन इस पे ऐसे हो रहा होगा, राइट। सो 50 अपॉन 80 लाइक 58 इज द वर्टिकल एक्सेलरेशन। ओके, ये तो इजी था यार। फर्स्ट का आंसर जस्ट यू नो ए डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं विदाउट मच कैलकुलेशन। सेकंड का आंसर कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टूडेंट डाउन द स्लोप, ए एस, अच्छा डाउन द स्लोप यानी कि ऐसे, राइट। So you know what the vertical acceleration is, fine. And the student must only be moving like that, right? Okay, cool. So उसका cosine ले लो ना basically, yeah, of course. So just उसका cosine ले लेते हैं। And क्या एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल 30 है, तो क्या करना चाहिए? ये एंगल 30 है, we want you know ये वाला एंगल 60 डिग्री। सो उसका cosine क्या हो जाएगा? ये जो भी एक्सेलरेशन है इसको a बोल दो, a upon 2 is equal to the vertical acceleration which we figure out to be 5/8, a is equal to 5/4। So B, although ये पूरा एनालिसिस है नहीं एक्चुअली, सो स्टिल काइंड ऑफ व्हाटएवर, ये तो हो गया। ओह अच्छा, या देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड एवरीथिंग जो कि अपन ने अभी तक यू नो यूज नहीं किया है, बस व्हाटएवर। एंड क्या है अगला? थर्ड इज कैलकुलेट द क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द स्लोप। राइट, अपने करना ही पड़ेगा ना इंडियन। ओके कूल। But for that, you know what? Just take the whole thing as a complete system. Yeah, right. ये मासलेस है, इसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं है होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स। ओ, अपने को इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन पता है, अपने को ये एक्सेलरेशन पता है, राइट। यू कैन यूज दैट फैक्ट आई गेस, राइट। सो you know g sine theta minus mu g cosine theta, that's going to be this acceleration, and now we know that's just equal to 5/4. So and g is of course like 10, or क्या है sin theta, sine of 30 degrees, and 1 upon 2 minus mu, so like square root 3 upon 2 times mu, that's equal to 5/4। तो ये गया अभी 2 आ जाएगा, इसमें नीचे में जाके 8 हो गया, whatever। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus square root 3 mu is equal to you know 1/4 I guess, which means square root 3 mu is equal to 3/4, so mu is equal to square root 3/4, which is a। फोर्थ करते हैं, फोर्थ है क्या इसमें? नहीं, पैराग्राफ 3। Paragraph 3 is a projectile is thrown velocity something at an angle of 53 with a horizontal. Choose the incorrect statement. Okay, velocity दी हुई है at an angle 53 की। Okay, ठीक है, 5 है तो फिर इसकी vertical velocity कितनी हो जाएगी? 53 sin क्या होता है? Sin is the bigger ones like 40. This is going to be 30 like that. ठीक है, it travels vertically with a velocity of 40 meter per second. No, it changes. It travels horizontally. हाँ ठीक है, so B तो हो गया, first का B। Second, determine the instant at which the projectile is at the same height. What? The same height? Wait, what do you mean by that?
अच्छा, तो दो इंस्टेंट्स दिए तुम्हें, फाइन। तो इसका पूरा टाइम पीरियड कितना कितना रहने वाला है? ठीक है, हो गया इसका। राइट, इसका पूरा टाइम पीरियड रहने कितना वाला है? दिस थिंग इज 40, सो लाइक ओके 80 अपॉन 10, दैट्स 8। सो 8 सेकंड में नीचे आता है, मतलब t अपॉन 2 इज 4, तो 4 से सिमेट्रिक चाहिए अपने को। दिस थिंग इज 4 minus 3, 4 plus 3, yes। दिस थिंग इज 4 minus 1, 4 plus 1, 4 minus 2, 4 plus 2, so all of these। सेकंड का आंसर D। थर्ड, the equation of the trajectory is given by, right, ये तो easy है, like y is just equal to ut like 40t minus half ut square, whatever। ए अपन ये पूरा कर ही क्यों रहा है? जो लास्ट टाइम अपन ने किया था अपन वो चीज यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ, वो नहीं करना चाहिए अपने को, जस्ट डू इट द यूजुअल वे, राइट? ऑफ कोर्स, या यू हैव टू डू इट लाइक दैट। ठीक है फिर, सो 40 क्या था अपना, 40t माइनस 5t स्क्वायर एंड x is equal to just 30t, तो या करते, like y is equal to 40 upon 30 is like 4/3 x, 4/3 x minus, so 5 upon 30 का square which is 5 upon 900 whatever यार, ये जगह 1 upon 180 I guess times x square, that should do it। So basically like 180y is equal to 60 times 40 is 240x minus x square, right? Yeah, that's gonna be option A। So next question, fourth। Okay, two projectiles are thrown simultaneously in the same plane from the same point. If the velocities are v1 and v2 at an angle theta 1, theta 2 respectively from the horizontal. Okay, then answer the following. Same time, velocities are given. Trajectory of particle 1 with respect to particle 2 will be a straight line. You know this, right? Yeah, so first answer B. Okay, second, v1 cosine theta 1 equal to v2 cosine theta, मतलब कि horizontal velocity same है, then choose the incorrect statement। One particle will remain exactly below or above the other particle, that's a correct statement in fact। Okay, trajectory of one with respect to other will be a vertical straight line, वो भी correct है। Both will have the same range, that's incorrect, एक का time period ज़्यादा होता है ना, yeah। So C is wrong, none of it, okay, so C is the incorrect statement। Okay, third, v sin theta, so उसकी vertical velocity सेम है, राइट? ओके, तो ठीक है, उनके y कंपोनेंट्स हमेशा सेम रहने वाले। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बोथ द पार्टिकल्स विल बी सेम, यस, सो ए इज करेक्ट। अपनी को इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, सॉरी। ओके, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल्स विल बी द सेम, यस, ओके। ट्रैजेक्टरी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ओके, वो भी सही है। नन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, राइट? दैट्स गॉट टू बी द थिंग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, वेट अ सेकंड, और यहाँ पे वर्टिकल, मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन देखा, मैंने वर्टिकल है कि नहीं देखा, राइट? बट हाँ ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी सेम है, तो फिर ये जस्ट वर्टिकल में ही चेंज हो रहा है, राइट? और यहाँ पे भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल में चेंज हो रहा है, सो यस एक्चुअली सी, इसका बी और इसका सी दोनों करेक्ट है। ठीक है फिर, नेक्स्ट, at a given instant A is moving with velocity of 5 meter per second upward, what is the velocity of B in that instant? A is moving with velocity 5 meter per second upward, okay। वेट, अपने कुछ दिया, अच्छा सॉरी, ये इस क्वेश्चन के बारे में, बट ये तो पैराग्राफ लिस्ट है नहीं, सो हाँ वॉट एवर। वेट, बट ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड है ही नहीं ना, तो फिर ये क्यों, वॉट एवर। कैसे आखिर ये तुम बोल सकते हो? ठीक है, बट तुमने इसको पैराग्राफ इस क्वेश्चन में कैसे डाल दिया आखिर? दिस डजंट मेक एनी सेंस। ओके, ठीक है। एट एन गिवन इंस्टेंट ए इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, ये वाला जो है दैट्स मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, फाइन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी इन दैट इंस्टेंट? तो इसमें कितना चेंज हुआ? इसमें चेंज हुआ है, ओ अच्छा, ये जो ये भी मूवेबल है, राइट? दैट्स बैड, ओके ओके। ओ ये लेंथ बाय द वे कांस्टेंट है, फाइन। सो 5 मीटर पर सेकंड ये ऊपर गया, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर गया होगा, राइट? तो इसमें कितना कितना चेंज हुआ?
ये 5 का इसमें 5 का इसे 5 का हर एक में लेंथ डिक्रीज हो गया, राइट? सब सेगमेंट में लेंथ डिक्रीज, 15 की लेंथ डिक्रीज हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ पे 15 की लेंथ डिक्रीज होनी चाहिए, सो 15 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। इसका आंसर ए। ओके नेक्स्ट। अच्छा ये वही गया, ठीक है फिर चेक कर लेते हैं। We did multiple choice questions हो चुके थे। Integer type 5, okay, this thing is 6, seriously? Okay, then you got 7, then 1 and then 3, ये करेक्ट हो गए। ये 6 कैसे, I don't know। ओके और कंप्रेंशन टाइप, फर्स्ट का C, सेकंड का B, थर्ड का C। फर्स्ट का कहाँ पे चला गया यार, बाप रे, इसमें फोर्थ वगैरह क्यों दिए, व्हाटएवर। फिर अगला है A B A, यस। फिर है A D A, ओके ये A है एंड देन दिस इज D, राइट? हाँ, weird। And then you got B C D and finally A। ठीक है, देखते हैं क्या क्या गलत हुआ। So according to them थर्ड का फर्स्ट का A है। कहाँ पे चला गया यार, थर्ड का फर्स्ट का A है, right? A projectile is thrown with velocity of 50 meter per second at an angle 53 degrees horizontal. So it travels vertically with a velocity of, अपने को incorrect चाहिए, right? Oh, okay, incorrect, okay, समझा क्या ओह शिट, ये गलत हो गया। सो बी और सी दोनों करेक्ट थे एंड देन ए वाज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई, ओके इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था मुझे, दैट्स व्हाई ये गलत हुआ। फाइन। और क्या गलत हुआ मेरा, और मेरा गलत हुआ है सेकंड, या इतना ही गलत हुआ। सो सेकंड नहीं, पैराग्राफ क्वेश्चन, इसका सेकंड। So तुम्हारे तरफ से 2/3 म्यू इज 6, दैट इज बेसिकली म्यू इज इक्वल टू 1/12/3। नो आइडिया हमने कैसे ये फिगर निकाला है, इसको वापस एक बार करके देखते हैं। Just want like mu g sine theta, that is along that, okay, right? And the centrifugal force is also that it has two battle, so plus r omega square and acceleration, that must have provided the friction completely, so that's equal to or friction is completely, इसका tangential, right? Acceleration तो है ही नहीं कोई, so that's okay। Let's just equal to the friction force, which is equal to, you know, oh sorry, it's not mu, it's just g sine theta, that's equal to mu g cosine theta। अब करते हैं इसे put, so g theta, that's 5 and then plus r is 0.1 times omega square कितना है, ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकंड, उसका स्क्वायर यानी कि 100, ये आपके क्या जगह प्लस 10, दैट्स इक्वल टू, ओके म्यू टाइम्स, ओके जी कोसाइन इज लाइक स्क्वायर रूट 3 टाइम्स 5, सो 5 स्क्वायर रूट 3 टाइम्स म्यू। इसकी गड़बड़ हुई है इसमें, ओके सो लाइक म्यू इज जस्ट इक्वल टू 5 plus 10 upon 5 square root 3, which is of course is 15 upon 5 square root 3, this is like, yeah, mu is, हाँ इंटरेस्टिंग। वेट क्या गलत हुआ इसमें, कुछ भी गलत हुआ लग तो रहा है मुझे, r omega square of course, oh so that is square root 3 not 1 upon, okay तो इसलिए 2 square root 3 is equal to 6, right? ये भी फिर मेरा गलत हो गया, समझे, okay, other than that everything's correct, so that's it, I'll see you in the next video।